हेलो। ते मस्त ते कानासाठी पण आहे. हा. पायऱ्या केल्या मस्त पुसते. त्याला पहिले पायऱ्या नव्हतं पुसत. मी पायरी नाही उचललं तर मग पुन्हा पायानं खराब होईल. मग म्हणलं वरच्या पायरीवर पहिले जा. वरच्या पायरीवर असं असं कर. मी एक एक पायरी अशी नाही खालच्या पायरीवर उभं राहायचं आणि वरची पायरी एक एक पुसायचं आणि खाली उतरायचं एक एक. काना मी काय म्हणते ते हात घाण आहे. चला हात धुवा पहिले आणि ब्रश कर. ब्रश 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 हा ब्रश गावाला नेऊ आता. मग काल विसरली तर आम्ही ब्रश आणला. हात दे ना. गेला हात ब्रश देतो ना. काय काय चांगले घास चांगले घास असे असे घास पहिले. ते पण किती मोळ आहे का. निघालं का हातात ते पाणी असं साडवा लागतं आणि हे बघ ते फेस निघते हाताला. आता खाली हात नाही झटकू कोणी पडून दे त्याच्यावरून. हे टॉवेल पुस. छान आहे टेस्ट.
Hello. Hello. माझा Welcome all. We are starting just in 10 minutes next. Our guest speaker and chairperson of this meeting, Zoom meeting, have been joined. We are starting in next 10 minutes.
Welcome all. We are just starting in next 5 minutes. Our guest speaker and chairperson of this session have been joined. We are starting in next 5 minutes. We are starting in just 5 minutes, sir. এগুলো কি করছো? মিটিং হচ্ছে কানে গুঁজো। কিচ্ছু দেখছে না, সব শুনে যাচ্ছে। এই যে এই রমন সিং আছে না, রমন সিং এখানে ওই সার্জিক্যাল সোসাইটি হচ্ছে আমাদের দেবীরায়ের ছেলে, পাস করেছে এখান থেকে। मैं डॉक्टर संदीप मिश्रा, आप सभी का इस हमारे नीमा सर्जिकल सोसाइटी की तरफ से आयोजित वेबिनार सीरीज में, जिसका जब पहला एपिसोड हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये
एक ऑस्पिशियस डे जिसमें नीमा का फाउंडेशन डे है आज, इसके उपलक्ष्य में हम लोग एक नई एक्टिविटी करके एक थ्रू आउट ईयर के लिए ये एक्टिविटी ओल्ड इज गोल्ड सीरीज के नाम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें संगे पड़तो এখানে জেবিরায় अ, লখনৌতে इसमें हम लोग सभी शल्य को मॉडर्न टेक्निक से अवगत कराने के लिए हमारे पिछले जितने भी सीनियर्स डॉक्टर है ऑल ओवर इंडिया में उनसे संपर्क कर उनका नॉलेज का एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नीमा सर्जिकल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश हम इस सीरीज वेबिनार के माध्यम से करने वाले हैं। एक पहल नीमा सर्जिकल सोसाइटी के मार्फत हम ले रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का वेबिनार के की स्पीकर जो है ये डॉक्टर रमन सिंह सर है, जो हमारे नीमा सर्जिकल सोसाइटी के सेंट्रल काउंसिल के प्रेसिडेंट भी है। डॉक्टर रमन सिंह सर बेसिकली बनारस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 1983 में इनका शल्य पास आउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और तब से ये उस क्षेत्र में बनारस और उसके आजू बाजू के यूपी के क्षेत्र में एक काफी अच्छे सर्जन करके प्रख्यात है। इनका खुद का एक 150 बेडेड का सूर्या हॉस्पिटल औरिया में है, जिसके वो डायरेक्टर है। यह खुद लैप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी के लिए प्रख्यात है और एक काफी फाइन हैंड सर्जन, प्रिसाइज सर्जन या इमिनेंट सर्जन जिसे हम कह पाएंगे, इस परिभाषा में वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में काम करते हैं। और ऐसे व्यक्ति का नॉलेज पीएचडी करने के बाद जिन्होंने आज जिसकी पूर्ण विश्व में डिमांड है, ऐसे एंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी का जो संवर्णन सुश्रुत संहिता में या शल्य संहिता में जो दिया हुआ है, जो प्राचीन संहिताओं में जो दिया हुआ है, उसका आज का मॉडर्न इवैल्यूएशन करके आपके सामने वर्णित करने का और आपका कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये सेमिनार हमने अरेंज किया है। इस सेमिनार के जो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर प्रमेय ढगे है। वो नागपुर से है। वो 2013 बैच के एमएस शल्य पास आउट है। ये काफी प्रख्यात सर्जन नागपुर से है। ये लगभग आज से 10 साल पूर्व जब से ये शल्य पीजी पास आउट हुए, मेरे बैचमेट भी है वो, पास आउट हुए तभी से वो लैप्रोस्कोपी के बहुत प्रोमिनेंटली और कॉन्फिडेंटली सर्जन करके नागपुर में प्रख्यात है। इनका खुद का 100 बेडेड हॉस्पिटल यस हॉस्पिटल के नाम से नागपुर में है। काफी बड़ा हॉस्पिटल है और वहां पे सभी चीजों से इक्विप्ड ऐसा हॉस्पिटल है। महाराष्ट्र में किसी शल्य फेलो का ये पहला इतना बड़ा हॉस्पिटल है ऐसा समझ में आता है, जिसका वो खुद ओनर है। और डॉक्टर प्रमेय डगे सभी कॉम्प्लिकेशंस के साथ में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं। एंडोस्कोपी का एक बहुत अच्छा ओरिएंटेशन उन्हें है। साथ में वो अपनी क्लासेस भी, लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग क्लासेस भी चलाते हैं। तो ये सब परिचय आपका है। मैं मेरा परिचय बता दूं, मैं डॉक्टर संदीप मेश्राम 2013 बैच का एमएस शल्य पास आउट हूँ। नीमा सर्जिकल सोसाइटी की स्थापना के लिए हमने पहल की थी, जिसका मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। गोंदिया जिले में तिरोड़ा करके एक तालुका प्लेस है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 11 सालों से वहां पर मैं एक सर्जिकल हॉस्पिटल चलाता हूँ, जिसमें बेसिकली ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा के ऊपर हम लोग ज्यादा भर देते हैं। मैं खुद मैक्सिमम ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज करता हूँ और साथ ही में लैप्रोस्कोपी और जनरल सर्जरीज भी करता हूँ। मैं अकाडमिक पार्ट में भी एक कॉलेज में प्रोफेसर करके कार्यरत हूँ। तो ये हमारा परिचय और हम लोग, मैं भी माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर रमन सिंह सर को, ताकि वो प्रमेय सर का इंट्रोडक्शन दे और वेबिनार को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। रमन सिंह सर। सर का इंट्रोडक्शन रमन सिंह कर से ए बाप। हेलो रमन सिंह सर। हेलो आपको स्पीकर बंद है? रमन सिंह सर।
Yes, I'm audible now. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello, am I audible? I'm audible. Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Can you And see? the PPT is also visible. Okay, thank you. So, can I start now? Can I? Can I start now? Yes, sir. Dr. Kashikar sir हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है नेशनल निमा सर्जिकल सोसाइटी की ब्रांच में, वो भी ज्वाइन हुए हैं सर। Okay. वेलकम सर। Good morning, Dr. Kasikar. Good morning, sir. So, Dr. Sandeep, can I start now? हाँ सर, I am thankful to NIMA Central Branch, and I am also thankful to NIMA Surgical Society to give me the opportunity to talk on the topic of शल्य तंत्र में नाड़ी यंत्र का क्रमिक विकास. I am thankful to Dr. Paramir Dhage, who is a stalwart in Nadi Yantra, and I am also happy to know that he belonged to Nagpur, because my guru, Professor P.J. Deshpande, through him, whatever I am today, I am due to his blessing only. He belonged to Varoda, Nagpur, and he was professor and dean in the Department of Shalya Salak at Banaras Hindu University. Dr. Deshpande is now can be called as a father of modern Shalya, because before Dr. Deshpande, there was no Shalya Salak Prasuti Tantra as a clinical subject, and it is he who has established the Shalya Salak and Prasuti as a clinical subject in Varanasi. After completing his AMS degree from Banaras Hindu University, he went to Vienna, Germany, and joined postgraduate education. And after passing, he got the degree ZATH and S. It means Zeugnis in abdominal and thoracic surgery. After completing his post graduation in general surgery, he came to Banaras Hindu University, to his own mother institution, and first he started his career as a anesthetist at the Shalya department of Banaras Hindu University. Later on, he was appointed as a lecturer, reader, professor, and dean in Banaras Hindu University. He established the Shalya Shalakya and Prasuti in that department. We know that our Shalya Tantra is described in Susu Sandrika in a form of
the sutras only. The sutras and the formulas only come after a lot of experience. So no doubt he was experienced in Ayurvedic surgery, Salya Tantra, master of our literature, the Susu Sangita, and he was also master in general surgery. So he was the authority to explain the sutra of Salya, of Susu Sangita, and he was able to describe the hidden meanings of the sutras of Susu Sangita. He was a real teacher, very good practitioner, very good surgeon, good human being, and he was called as a born surgeon. So Dr. Deshpande, he explained the Nadi Yantra as Nadi Yantra Anek Prakarani. It is of different types. It can be used Anek Prayojanani for many holes in surgery. Ekoto Mukhani, having single opening, Ubhayato Mukhani, double opening, Sroto Dwar Parihani. The thickness is according to the girth of the opening of our system. Yatha Yog Dirghani, it can be of any size which can be suitable for the working purpose. Taki Sroto, it can be used to remove the foreign bodies from the different parts of the human body. Rog Darshanartham, to see the particular lesion from inside the body, which cannot be seen or recognized from outside of the body. Achusanartham, it can be held to aspirate the foreign body, like first different types of fluids from the body. Kriya Saukaryartham, it helps in the or facilitate in the surgical procedures. Susurta say that whatever you have described in this version, that is not the end of the Nadi Yantra. A surgeon or Shalya Chikitsak, he can innovate according to his own intelligentsia. Many types of instruments which can be needed to perform the good Nadi Yantra surgery. So there is no bar to develop the new ideas or new instruments to develop your skill in this field. Now, Susuta about 5,000 years ago, he explained Nari Yantra. Susuta was the first scholar who has given the vision of tubular instruments for the use of intracavitary organ, as we have seen here. Susuta further advised to innovate countless instruments according to the surgical. हरिपुर से भाई हाँ वो भी ठीक है सब After बढ़िया Susuta concept of Nari Yantra, बोले लग जाता है various surgeons of the whole world, फिर जो नहीं है तुम देख ले उस लाइन में पहले जहाँ जहाँ लगा ले फिर जो बचे फिर their own innovations and they developed this Nadi भाई Yantra कुछ बोले वाले present मार्केट में से आयुष्मान वाला endoscopes and laparoscopes. मार्केट में आयुष्मान वाला The contribution of various scholars from 18th century. New developments are still going on day by day and they are improving. रमन सिंह सर एक मिनट रुकिए रमन सिंह सर एक मिनट रुकिए जिसका जिसका भी फोन अनम्यूट है कृपा करके वो म्यूट करे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कोई सीनियर सर्जन हमें सिखा रहा है और ये बेसिक मैनर्स है कि अपना फोन म्यूट करे थैंक यू सर आप शुरू करिए Okay, thank you. After Susuta concept of Nadi Yantra, various surgeons like gynecologists, physicists, industrialists, and added their own innovations to develop the endoscopes and laparoscopes in present form. The present endoscopes and laparoscopes are the contribution of various scholars from the 18th century.
The new development are still going on day by day. By the first concept of Nari Mantra, about 5,000 years given by the Susruta himself. Now, the first person who is considered as a father of laparoscopic surgery is Philippe Bogini. In 1806, by curiosity, he developed an instrument having an idea to see, to observe inside the cavity of the human being. Now we see the who is considered as a father of laparoscopic surgery in modern science. He has only a single idea to observe in the cavitary organs. But Susruta, whatever he has described, the detailed laparoscopic and endoscopic, these principles, the structure, the design, and the indication, like as that aspiration, observe, and to facilitate in the main surgical procedure. And even today, you cannot, the modern science also not able to add any more indication as the Susupta has described 5,000 years ago. Anyhow, Dr. Bozini called as the first in modern science in 1806 who described an instrument to see under the human body. But unfortunately, this he never used his instruments in the human body. Moreover, the Vienna Medical Society disapproved of such curiosity of Bozini, and they condemned his attempt to see the human body with the help of his instruments. Later on, William Beaumont in Michigan in 1822, he first developed an endoscope for human being. He used electric light, which was a major step in the improvement of endoscopy. Now, the second instrument, which is more important, without that we cannot initiate our laparoscopic surgery, especially, was the Varus needle, and it was developed by J. Varus in 1938 in Hungary. He developed these instruments to treat the tuberculosis, and for aeration in the lungs, he was using these instruments at that time. Now, the next important instruments, which is known as this insufflator and optics, they are developed by Rolf Palmer in 1944, and he also advised to place the patient in Trendelenburg position for the gaseous distension to perform the gynecological laparoscopy. Karl Stoss, a German person who introduced very bright but cold light to provide excellent visibility. Karl Stoss and Harold Hopkins. Harold Hopkins was the industrialist, while Karl Stoss was the optical engineer. They combined their both hands in 1950 and played a very crucial role in the development of endoscopy. The combination of optical engineering and skills of vision, camera, and monitor coupled to revolutionize the field of medical optics. The first laparoscopic cystectomy was performed in 1987 by Philippe Moret in Lyon, France, which is considered as this technique is considered as the gold standard technique in the gallbladder. Now, how this Nadi Yantra instrument was used as a diagnostic purpose and to help the surgical procedure in Banaras University. We have to think about that, and I am happy the person who has developed this was also belonging to Nagpur. As I said earlier, as my Guruji, Professor Prabhakar Janardhan Deshpande from Varora. After his joining in this institution, he developed all the subjects of clinical like surgery, Salyatantra,
Prasuti Tantra and Shalakya Tantra. Now, in 1983, the diagnostic laparoscopic and cystoscopy was started by me in the Banaras Hindu University with the in the guidance and leadership of Professor P.J. Deshpande. Dr. Deshpande later on sent me at Calcutta Hospital to learn the upper and lower GI endoscopy for my PhD thesis work on Nadi Yantra. Now, if you see the literature, there are there are sutras over there to develop the skill and to be a eminent and good surgeon. It is said by Susut that Prodesya Vedyasya Siddhir Bhavati Nityasha Tasmat Paricharan Kuryat Shastranam Dharaneshana. It is very essential to be familiar and to know about your instruments before applying it to on the human body. Because until unless you know your instrument and know how it works, you cannot do this, apply this instrument on the surgical procedure. It is very difficult to perform the surgery even. So, first of all, our Acharya said that first of all, you know your instruments and be familiar with the instrument, that how it is working, how it is be cleaned, how it is be kept in safe place where it can be used in the next surgical procedure. अधिक सर्वम शास्त्रार्थम अपि शिष्यम योग्याम कार्ये सुबहु श्रुतो अपि कृति योग्यम कर्मसु अयोग्यो भवति. Whatever intelligent you are in the theoretical aspect, this only theoretical aspect, it cannot make you a good surgeon. To be a good surgeon, it is very essential to practice over that. If you have no human body or you are no surgical procedure, you are not able to perform the human body, and it is not recommended that directly after learning somewhere you should apply your work over the human body for the safety of the patient. The safety of the patient should be the prime of each and every Shalyatantra, the Shalyak or Ayurvedic surgeons. So tasmat kaushalam anvicham char shastra char agni karmasu yasya treha sadharmam tatra yogyam samachar. Wherever there is similarity of working, you can innovate according to your own. The devices where you should regular practice for application of shastra, the instruments, how to apply the instruments, how to use the instruments, then how to apply the char, how to use this agni, which is called today. You can call it the cautery. This cautery is also very important instrument, but you should know how it should apply, how the cautery can work efficiently in your day-to-day practice. Now I can give you one example how initially when I have no money. Initially I started innovate the articles where I was working or practicing the laparoscopic surgery. This this is a, you can see simply this is a box, but this box have this. There are some aerator, three aerators is used in this series, and the switch is outside, and there is one tube for insufflation. After switching the single switch, there is a low flow rate of the air, and after pressing the second switch, the air flow is increased, and just after pressing the third one, the higher speed is there. This is an instrument which were used in my previous day, and this is also a handmade device where you can practice the laparoscopic surgery. This is a carton, this is a box. In this box, it is covered from
all sides, except there is a window where we can place the articles, objects for the practice of laparoscopic surgery. Now this is considered to be the first code as we apply in the laparoscopic cholecystectomy. This is the second code and this is the third code. Now you can introduce your laparoscope and put the object inside. This, you see, in laparoscopy surgery, the very important stage is hand and eye coordination. You have to see somewhere and to work somewhere and different from the open surgery. So for this practice, you can use device at your home, like you're placing, you can put any object over there. You can also practice the suturing over there. You can practice dissecting over there. You can practice holding the instruments, holding their devices. Now, initially, Nari Yantra was used for a diagnostic purpose in 80s in Banaras University. Initially, vision was the vision was through the eyepiece of the telescope. There was no camera at that time. And new addition like camera, insufflator, recording, etc. was incorporated gradually in our department. And now we can do this all the endoscopy and laparoscopy and cystoscopy in our department. Now this is endoscope. On right side that is the colonoscope. This is processor. This contain water containing bottle for irrigation. Now the second one on left side is the colonoscope. On the right side is the upper GI endoscope. Now you can say colonoscope as a Virhadant Nadi Yantra Rog Darshana. Here is the patient of bleeding per rectum. While examining, there was a big pile mass. Situated in the rectum, but while examining the bowel up to the sigmoid, now you see gradually insufflation is done, and the same time the colonoscope is gradually introduced into the rectum under the vision. The most important, you should proceed under the vision. Don't move blindly, otherwise you can rupture the colon. Now this is the normal appearance of mucosa of the sigmoid. You can proceed gradually while opening this bowel. This is the left descending colon. This is also normal with the obstructions over there. This is the sign of colon. After the split flexor, it is normal. Then gradually the endoscope is withdrawn after this desufflating the air, because you insufflate a maximum amount of the air, patient is very uncomfortable and pain. Now the next is upper GI endoscopy. This is pylorus. I am waiting to open the pylorus and introduce the endoscope inside. Now this is the second part of the duodenum. This is also normal. Mucosa is also normal. Gradually the endoscope is withdrawn outside. Suppletion and desufflation is done for the purpose of looking the
organs and prevent access in circulation to the cavity, which can produce discomfort to the patient. Now this fundal mucosa, stomach mucosa is also normal. Gradually we are withdrawing out by deflating the organ. Now the GI gradually this after deflating you can see the clear mucosa. Only some mucus is there, no bleeding, no tumor, no ulcer, and gradually it is done. This is G junction. This is esophagus. G junction. This is esophagus. In second endoscope, you can see there is a lesion which does not allow endoscope to go inside. This is in case of malignancy, C. esophagus. Biopsy was taken and sent for histopathology. This is main instruments for Mutrasa Nadi Yantra. On right side is a telescope, the sheet, the bridge, and irrigation fluid tube. करा भाई, And करा दो, खाली करो हमको भी. now this is a picture of normal cystoscopy. The patient was having histories of acute pain in the hypogastrium, and there was retention of urine. Previously, there was no any history of urinary obstruction or urinary problem. This is very montanum. This is bladder neck. I was rushing any calculus over there. Now this is the interuterine bar. On left side, ureteric opening is normal. This is ureteric opening. On right side also, interuterine opening is normal. In particular portion, all around the bladder, inspection was done. There was no any pathology, and patient was discharged the same day after the Nadi Parikshan of Mutrasha. Now, this is a video of Udar Nadi Krita Pittasha Chedan, or you can say is a lab polyp. Now the epigastric port is introduced. Now at mid-clavicular area, the second working port is applied. It seems the liver is normal. The gallbladder is also not much inflamed. Apparently, it looks like a very simple cholecystectomy. Now the fourth port at the mid-axillary line is introduced afterward. Here is the right place and safe place to introduce the fourth port without injuring any abdominal viscera. With the help of grafter, first of all, we retract the gallbladder in capillary and medially. Now, by third port, another grasper is introduced. To hold us
Hartman's pouch, and this is retracted laterally. Fundus is retracted medially. Now the principles of hold, or you can say hook, then loop, and then hook to prevent any injury of any important structure. Gradually, all the structures surrounding the collapse triangle or surrounding this is the stone impacted at the Hartman pouch. Very slowly, hold a only pinch of the small tissue and gradually eskeletonize the cystic duct and cystic artery, which are the two structures which is entering in the gallbladder. These two structures we should define carefully by dissecting medially and laterally. Now stone is pushed up. The cystic duct and cystic duct artery is dissected, and the main purpose is to make a big window, large window, to prevent any injury of the structures, especially CBD. And we should be at the upper level of Robius feature. You see on the right side, this is Robius feature over here. So you should always keep yourself above this area. Prevent any CBD injury. Believe that in the CBD, we are not doing this kind of CBD. Our main aim is to dissect around the cystic duct and cystic artery. Posteriorly, gradually, a large window is made. Always hold a small piece of tissue very gently. Dissection should be very gently. For our one stalwart, Professor Dupa at Banaras Hindu University, he was always telling love with the tissue, to prevent the sepsis. More the sepsis, more the tissue handling, more the damage to tissue invite, more infection. So handling this tissue very carefully without injuring vital structures, go by a very gentle hand. A stone knife which is fixed at a Hartmann pipe usually disturb the dissection. Now it is safe to put the stone in the gallbladder lumen, and now this dissection is completed. Posterior to the vital structure, that is cystic duct, cystic artery. Now we can see this is CBD. So now this is safe area, and gradually
dissection of gallbladder. So the gallbladder is done. শুনতে না বলে কানে দিয়ে শোনো। How this is an injection technique. ওখানে যে The both নাড়ি যন্ত্র, setting এটা তো নাড়ি, সেই নাড়ি যন্ত্র যে আগেও ছিল, সেটা প্রথম যে শুরু হয়েছিল তার ডেভেলপমেন্ট আমাদের হাত থেকে ওটা নিয়েছে। এখন তোমাকে যদি by blood dissection, a large window is made. ওটি হচ্ছে ওটা তো ওটাই দেখাচ্ছে। The importance should be given to prevent any injury to any vital structures. One should not be hurried. Now gradually all the attachment, this is CVD, the fibrous tissue attached over here, this is cystic duct and this is cystic artery. This is CVD, this is CVD. Always be careful over here. Now this is large window and there is no any important structure going to the gallbladder. As we said, always look carefully. Any structure which is coming from the liver weight and going to gallbladder should be dissected and inspected carefully. Here this may be artery or this may be only fibrous tissue. So be careful not to disturb any vital structure. Sometimes there is a right hepatic artery over here and there is some tributary of artery. This may be artery or this may be fibrous tissue only. So give the time, dissect very carefully. And now it seems that this is fibrous tissue only. Go fiber by fiber to prevent any bleeding. If a very tiny blood vessel is there, you can use 40 also. This, now you see, previously it was looked like fibrous tissue, but I think this is artery, so it is cauterized. You can cauterize it also, or you can apply the clip over there. There is no harm. And after reducing the tension, just to another examine the structure, what you are holding, what you are dissecting, what you have dissected, and better to show your assistant and give him the demo of the structures, because laparoscopy surgery is not a surgery where only surgeon is involved. The anesthetic is also involved, the assistants are also involved. Because in laparoscopy surgery, it is said sometimes the surgeon may confuse of some anatomical structures. So he get the advice of operation theater persons like his assistant and the anesthetist before cutting or removing that structure. Now this large window this time. This can be simple artery or fibrous tissue. Better to burn it. If it is
It can be done in less time also, but it is very important to be satisfied with your dissection, the structure which you are cutting before that, the structure you are saving. Now here we will apply the clip. This is the clip. Apply it proximally. Next clip, just distal to the first clip. The third clip should be applied just at the distal part near the Hartmann pouch. Now the structure is divided with the help of scissor. In between second and the third clip. This is also should be divided in small pieces to show the structures what you are cutting. This is the cystic duct, and the lumen is there. This may be attached with some artery also, or if it is not pulsating, it means artery is not attached in this structure, that is cystic duct. Now with the help of hook or with the help of a spatula, someone uses spatula. It depends on the ease of the surgeon. Now this looks to be the cystic artery. This is divided at the attachment of the gallbladder. Now if it is pulsating, it means it was artery. Yes, this is artery. During dissection, we are feeling that this is a simple fibrous structure. But as I told you, be careful before dividing any structures or cutting any structure. Now the attachments from both sides of gallbladder is cauterized. Gallbladder is gradually removed. If any bleeding, that should be cauterized. There is no much bleeding over there. The instruments which is cautery is also a very good tool for the dissection. You should also use it very cautiously to prevent any injury of the vital organ while applying this cautery. Now only frontal part is attached. You can remove the fourth grasper which was holding and retracting the fundus, and with the help of third grasper and the second from the second port the hook. Sometimes there is artery near the fundus, so be careful for any bleeding. Now the safely gallbladder is removed, drain is put, gallbladder is removed, and port is closed. Thank you very much.
Any question or any comment? हेलो Dr. Sandeep? सर, ये काफी अच्छा प्रेजेंटेशन आपने ये किया राइट फ्रॉम। मैं डॉक्टर प्रमेय ढगे और डॉक्टर काशीकर सर को हैंड ओवर करूंगा कि वो इस सेशन को चेयरपर्सन के रूप में संभाले। डॉक्टर काशीकर सर, डॉक्टर ढगे सर। Hello, hello everyone. Can you hear me? Hello. Yes, sir. हाँ संदीप सर आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ I'm thankful to Dr. Raman sir for very nicely elaborating the origin of laparoscopy और नाड़ी यंत्र। बेसिकली मैं यहाँ पे जो बाकी लोग यहाँ पे ज्वाइन है उनसे ये कहना चाहूंगा कि वी शुड नॉट टेक laparoscopy as a separate topic or as a separate theory. It is just the evaluation of the surgical processes which have been taken care of right from the era of Sushruta. So it is nowhere that it is the legacy of only modern surgery or it is something that only modern people can do. It is the thing, it is the innovation, it is the practical innovation rather than we must say, which has been mentioned previously in our own theories. Sushruta has mentioned n number of Nadi yantras which were utilized for the removal of, we can say, foreign bodies, for investigating, for diagnosing n number of diseases. Those Nadi yantra, we must say, that has been elaborated more cautiously, more sophistically, and more precisely, and has been put forward to the world, name with changing the nomenclature as laparoscopy or endoscopy. So there's nothing new, there's nothing different that we must say that laparoscopy is not for us. So basically, I would like to promote all our colleagues that we should, as per the new generation, as per the new era, as per the new advances which are being taken in the medical fraternity, we should all try to learn the things. We should all try to innovate ourselves and take a call that laparoscopy is a part of surgery. Laparoscopy is just an innovation, technological, practical, and skill innovation. And we should adapt to the new innovations. As if we know, when we were young people, we would like to travel with cycle, we would like to travel with motorcycle, we were using buses and other transport authorities to go from one place to another. But right now, we are trying to save our time. It's like we use fast moving trains and other things. The same way. In this era of surgery or in this era of medical science, we need to move fast forward, and for that we need to adopt the technological advances which have been made in the medical fraternity, and that is one part which can be called as laparoscopy or minimal invasive surgery. So I would like all of us to join the era of minimal invasive surgery and try to adopt the things so as to prove ourselves in our future. Thank you. Sanjay sir. It is a wonderful demonstration by Dr. Raman Singh sir for the evaluation of laparoscopy from the aspect of our Sushruta, ancient science of Ayurveda, Shalatantra. Hope all now the concept of laparoscopy is from our own branch. This is the concept we have to introduce in our fellows, and I guess that all are happy to know that the evaluation of Nadi Yantra, that is laparoscopy and endoscopy of today's era, has been contributed by our Sushruta. As Dr. Pramed Dhake said,
there is no need to worry, or there is no need to consider laparoscopy as a separate or a part of a modern science or modern allopathy surgery. And now with the keynote that most of our Challa graduates are now inclined towards their interest towards the laparoscopy and एंडोस्कोपी, कि वो खुद का वो पार्ट समझकर हम लोग उसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो, हम लोग आगे भी इस नीमा सर्जिकल की ब्रांच के माध्यम से आप लोगों को लैप्रोस्कोपी और ऐसे ही नए नए इनोवेशन हर डिसीज के लिए एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सीनियर्स के थ्रू और एक मॉडर्न ईरा के जो नए सर्जन है उनका एक कोलैबोरेशन बिठाकर आपके तक पहुंचाने के लिए प्रयत्न हम लोग जरूर करते रहेंगे। आप सभी ने इस वेबिनार के लिए समय निकाला, आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप रमन सिंह सर अवेलेबल है, आप उनसे पूछ सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ डॉक्टर मनोज बोलिए, डॉक्टर बोलना चाहते हैं। हाँ हेलो डॉक्टर हाँ, I want to ask a question. हाँ See, we all know the development of laparoscope and the work done by the Sushruta in his era. But the question is what we are doing for the new development in the endoscope or laparoscope. Though we know we are not the engineers, but some concept we should have that should be contributed to the Sushrutas, which we are the followers. So there should be some contribution from surgical field of the Ayurveda, so that we can say that this is the new era concept of Sushruta. So what new development we need to do in this field of surgical field, or you can say the laparoscopic field, that should be named as a Sushruta's field of surgical intervention. Any concept for development of any type of scope, any type of light source, any type of, you can say, dive that we see in surgeries. So anything new innovation which we need to do in this. ऐसा है डॉक्टर मनोज जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि पहले तो आपको ये गौरव होना चाहिए। यस, कैन आई से? यस सर प्लीज। हेलो, हाँ मैं ये बताना चाहूंगा डॉक्टर हाँ सर, मनोज कि पहले तो हम लोगों के अंदर ये गौरव होना चाहिए कि ये लैप्रोस्कोप, एंडोस्कोप, ये जो कुछ है, जो काफी हम लोगों का विरोध होता है समाज में, पेशेंट्स भी बहुत अवेयर नहीं होते, वो समझते हैं कि आयुर्वेद का मतलब चूरन चटनी। ये तो कुछ नहीं है। पहले हम लोग भी हिडन थे, छुपे हुए थे, और हम लोग भी छुप छुप के सर्जरी करते थे, कहीं ऑब्जेक्शन ना हो जाए। बहुत से स्टेट में इसका परमिशन नहीं है। लीगल इशू के लिए हम लोग काफी फाइट कर रहे हैं, और डे बाय डे हम लोगों को उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। लीगल इशू में भी हम लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी ये घटना हुई कि एक शल्य था पीजी का, जो इसने आपको वडोदरा से किया था। उस पीजी शल्या को ये नोटिस मिला कि आप जो है वो आयुर्वेद सर्जन होकर के आप आयुर्वेदिक सर्जरी कैसे कर सकते हैं। उसमें कमिटी बना, और कमिटी ने जो भी हम लोगों को, हमारा जो सब्जेक्ट है अष्टांग आयुर्वेद, उसको एक्सप्लेन किया, और उसने वो एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ सर्जरी है, उसने एक्सप्लेन किया कि हमारा सिलेबस है, उसने एक्सप्लेन किया कि हमने पढ़ा है, हमारा इंस्टीट्यूशन है जहाँ हमारा रेगुलर सर्जरी होता है। इंस्टीट्यूशन ने भी लिख के दिया कि यहाँ रेगुलर सर्जरी होता है, इन्होंने सर्जरी किया है, पढ़ा है। तो आके उसको फिर वो कमिटी ने उसको रिकमेंड किया कि नहीं, ये जो है आयुर्वेद के जो पीजी हैं वो सर्जरी कर सकते हैं, क्योंकि उनको सर्जरी पढ़ाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 58 टाइप के सर्जरी का उनको परमिशन दिया है, और डे टू डे उनका और भी लीगल जो सपोर्ट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, इसलिए यू कैन डू सर्जरी। और आपको याद होगा कि इसीलिए हम लोगों ने अपना पहला जो वर्कशॉप उत्तर प्रदेश चैप्टर का किया था, उसके पीछे मोटो यही था कि उसको हम लोग पेपर में पब्लिश करेंगे, सारे गवर्नमेंट फैकल्टी को देंगे,
और ये बताएंगे कि हम लोग जो है आयुर्वेद के लोग भी आयुर्वेदिक सर्जन हैं, आयुर्वेदिक एनेस्थेटिस्ट हैं जो सर्जरी करते हैं। रही बात आपकी कि हम लोग कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो गुरुजन थे, जो इसके बारे में आयुर्वेद के भी पायनियर थे, मॉडर्न के भी पायनियर थे। जब तक आप आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों के पायनियर नहीं होंगे तब तक कुछ आगे करना मुझको लगता है कि बहुत मुश्किल है। अब जैसे एक एक श्लोकी है समुद्र की जो पेशेंट अगर ट्रॉमा इंजरी वाला है, समार प्रतिपन्नास्तु वीणमुत्र मारुत स जीवति मानव कुष्ठे अपि भिन्ने अपि। ये पहले अंडर ग्रेजुएट में कोई बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगी इसका मतलब क्या है, लेकिन आज वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हर सर्जन अपने पेशेंट से पूछता है कि आपका हवा खुला है, फ्लैटस पास हुआ है, विंड पास हुआ है, और उससे उसको खुशी होती है। तो सुश्रुत का श्लोक अब याद आता है कि सुश्रुत ने क्या कहा था। उसी तरह से सुश्रुत ने बहुत सी चीजें दी हुई है जिसको हम लोग सर्जरी में आज एडाप्ट कर सकते हैं। मिनिमम इतना भी कर सकते हैं कि जहां आप एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल कहाँ होता है। वहाँ ही इस्तेमाल होता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन होता है। मॉडर्न साइंस के इंसान समझते हैं कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया होते क्यों हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीएचयू में एक वर्क हुआ था, प्रोफेसर एल.एम. सिंह थे हमारे आयुर्वेद की तरफ से, मॉडर्न साइंस के पैथोलॉजी से डॉक्टर पी.सी. सेन और यूरोलॉजी से डॉक्टर वी.एन.पी. त्रिपाठी। उन लोगों ने देखा कि जो पेशेंट आते हैं यूटीआई वाले, इन्फेक्शन वाले, उनका कल्चर किया जाता है, उससे बैक्टीरिया रहते हैं और पेशेंट को बहुत परेशानी होता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है तो मरीज को आराम मिलता है, फिर रिकरेंस होता है। तो उसमें उन लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद की तरफ से प्रोफेसर एल.एम. सिंह ने कहा कि भाई इसको वस्ती चिकित्सा करो, मॉडर्न का दवाई हम नहीं देंगे। उन्होंने वस्ती चिकित्सा किया तो जो हमारे पैथोलॉजिस्ट है बीएचसी के डॉक्टर पी.सी. सेन, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ा आश्चर्यजनक चीज हमको दिखा कि जो बैक्टीरिया आपके ट्रीटमेंट पहले था वो ट्रीटमेंट अब वही बैक्टीरिया जो वस्तु चिकित्सा करने के बाद विरुलेंट नहीं, क्लिनिकल साइंस सिम्टम सब सबसाइड हो गया। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने गुरु लोगों ने हमारे प्रैक्टिस किया, पांडे ने भी देखिए आपको छाछसूत्र इतना बनाया, तो जब तक पूरा मॉडर्न का आयुर्वेद होता है वो छाछसूत्र का आविष्कार नहीं कर सकते। इन्फेक्टेड पण प्रॉब्लम वाला, लेकिन अब देखिए सब लोग आयुर्वेद एवढी स्ट्रिप काढायची। उसी तरह से जब आप मॉडर्न सर्जरी पूरा जानेंगे, लैप्रोस्कोपी पूरा जानेंगे, आयुर्वेद को फिर अब सुश्रुत को पढ़ना रिवाइज करेंगे, खाली मॉडर्न जानने से नहीं होगा। आप तभी रिसर्च कर सकेंगे, समाज को कुछ दे सकेंगे, जबकि सुश्रुत को भी कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इसलिए पढ़ेंगे कि सुश्रुत एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है। जितना आप सर्जरी का एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितना आप सर्जरी करेंगे, उतना आपको सुश्रुत का कंसेप्ट समझ में आएगा और उससे हम लोग काफी चीज बोरो करके आप इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं और मरीज को लाभ कर सकते हैं। और तो हम दिखा सकते हैं कि हमारे आयुर्वेद में भी हम लोग लैप्रोस्कोपी सर्जरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुश्रुत ने रोका कहाँ है? स्वबुद्धाचार्य विवेकानंद कर्माणी बुद्धिमान में कहा है कि भाई अपने बुद्धि से विचार करो। मॉडर्न वालों ने तो उसको आगे बढ़ाया, आयुर्वेद वालों ने, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो अब समय आ गया है कि अब आप उठिए, जागिए, आगे बढ़िए और सुश्रुत को डेली पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, मॉडर्न लैप्रोस्कोपी को देखिए और सोचिए कि हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हमारे सामने भी दर्द हुआ है कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी करने के बाद एक पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक दूसरी जगह सर्जरी कराया था, एक एपिगैस्ट्रिक पोर्ट में उसको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था, पस आ रहे थे। हमने जो उसका पर्ची देखा, सारा एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया, उसका नहीं ठीक हुआ। और शोधन तेल जो कि सुश्रुत में नवग्रहादि गण औषधियों का जो उन्होंने वर्णन किया है, उसमें सारी औषधियां शोधने, रोपणे, हिते हैं और सवर्णीकरण है। सवर्णीकरण का कंसेप्ट आयुर्वेद में ही है, मॉडर्न में नहीं है। उसको उसका जो औषधि कुछ सेलेक्ट करके 15-20 औषधि सेलेक्ट किया, हमने तैल पाक किया और तैल पाक करके उसको जब घाव में अप्लाई किया, देखा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, पेशेंट का हील हो गया। तो जहां भी एंटीबायोटिक फील है, वुंड हीलिंग में मदद नहीं करता है, वो हमारा शोधन तेल करता है। उसी तरह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद शल्य में, सुश्रुत में, जो कि आपको कंट्रीब्यूट कर सकती है। आज के जमाने में जो हम लोग कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, अरे आपको हमको रोका है किसने करने से? किसी ने नहीं रोका है, लेकिन हम करने के लायक हो तो करने के लायक तभी होंगे जबकि पूरा मॉडर्न सर्जरी जानेंगे और पूरा आयुर्वेद का सुश्रुत का सूत्र और कॉन्सेप्ट समझेंगे। तब हम समझ सकेंगे कि इस मॉडर्न प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं, खास करके वुंड हीलिंग वगैरह में, उसमें हम आयुर्वेद से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तभी हो सकेगा जबकि दोनों को साइड बाई साइड आप आपका बैलेंस नॉलेज होगा। जिन्होंने भी जो इनोवेशन किया है, आयुर्वेद के सर्जन होकर अच्छी अच्छी चीजों का उन्होंने जो आविष्कार किया वो तभी किया है जबकि दोनों सब्जेक्ट को वो जानकार रहे। डॉक्टर पीजे देशपांडे दोनों सब्जेक्ट के जानकार थे। आज 400 में जो उन्होंने किया दुनिया देख रही है। आज वो भी अभी जिंदा रहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। तो उन लोगों ने जिम्मेदारी हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर रखी है, तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अपने को आयुर्वेदिक सर्जन बोलेंगे, समाज को बताएंगे कि हम भी सर्जन हैं, ताकि सर्जरी का पेशेंट मेरे पास आए। और जब मरीज आएगा आप सर्जरी करेंगे, सुश्रुत जानेंगे, मॉडर्न सर्जरी जानेंगे, तब आपको खुद ही बहुत से ऐसे मिल जाएंगे फॉर्मूला आयुर्वेद के कंसेप्ट, सुश्रुत के कंसेप्ट जो आप मॉडर्न सर्जरी अप्लाई कर सकते हैं। सर, विद द काइंड परमिशन ऑफ डॉक्टर काशीकर सर एंड डॉक्टर रमन सिंह सर, सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। शायद मैंने जो ऑब्जर्वेशन में चीजें लाई और जो थॉट मेरा है वो मैं यहाँ एक्सप्रेस करना चाहूंगा। सर मैं भी जबलपुर में एक पुरनाई आयुर्वेद कॉलेज में एचओडी करके काम कर रहा हूँ सर्जरी का। तो हमारा कॉलेज में सर खुद का फार्मेसी है और हम लोग अच्छा वहाँ पे मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। हम लोग वहाँ सर्जरीज भी करते हैं। तो मैंने पिछले तो 3-4 पेशेंट्स की जो हर्निया की है वहां पर, और तो उसमें सर मैंने इंस्टेड ऑफ एंटीबायोटिक मैंने गंधक रसायन का यूज किया है, राइट, एज अ प्रिस्क्रिप्शन। गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गुग्गुड़ और मतलब लोकल रोपन अपना जात्यदी तेल का एप्लीकेशन या जात्यदी घृत का एप्लीकेशन ऊन ड्रेसिंग के लिए। तो मैंने ये पाया कि एक 4 से 6 पेशेंट जो हम लोगों ने वहां पर किए, उसमें सर लोकल इन्फ्लेमेशन और एंड्योरेंस जो होता है वो बहुत मिनिमम मुझे दिखा सर। और आई वाज सरप्राइज कि वहां पर विदाउट कोई हायर एंटीबायोटिक यूज किए हुए इससे मुझे रिजल्ट मिला। मैं वो नोट कर रहा हूँ वहां पर बहुत बढ़िया। चीजें। अभी वो डिस्कस और वो कोई ऑथेंटिकेटेड हम लोग माने ऐसा मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एक मेश यूज करने के बाद में भी अगर उस चीजों में रिजल्ट मिल रहा है तो दैट इज गुड सर, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और वो चीजें मैं रिकॉर्ड पर लेने की कोशिश कर रहा हूँ सर। दूसरी बात सर, नहीं, अभी मेरे पास में काफी फ्रैक्चर्स के पेशेंट होते हैं, उन इन्फ्लेमेशन स्प्रेन के पेशेंट होते हैं। तो वो स्प्रेन के पेशेंट में हम लोग लाक्षा, रासना और त्रिफला का, सूक्ष्म त्रिफला का यूज करके उसका जो बोन हीलिंग और इन्फ्लेमेशन के ऊपर जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, उसमें भी एक अच्छे खासे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। ये नोटेड है। इसमें जब एक अच्छा खासा नंबर जब आ जाएगा तब इस बारे में हम लोग और अच्छे से बात कर पाएंगे। दूसरी बात सर, जैसे कि आपने कहा कि कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, जैसे मनोज यादव सर ने कहा कि कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक छोटा सा मेरा सजेशन रहेगा सर। आप सभी सीनियर से जो भी एनसीआईएसएम और शल्य के लिए फैकल्टीज के लिए काम कर रहे हैं या फिर जो भी पब्लिकेशंस कर रहे हैं, उसमें कि जो हमारे टेक्स्ट बुक्स है, राइट फ्रॉम सुश्रुता का चौखंबा का जो प्रकाशन आते हैं, उसमें जहां भी नाड़ी वर्ण का नाड़ी यंत्र का जहां पर उल्लेख है, उसमें जो विमर्श या परामर्श या कन्वर्जन जो ट्रांसलेशन उसमें देते हैं, या उसमें एक पैराग्राफ अगर वो ऐड करते कि भाई सद्य स्थिति में नाड़ी यंत्र का वापर इसमें एंडोस्कोपी के रूप में हो रहा है, या फिर उसमें उसके प्रकार अगर हम लोग उसके हम सुश्रुत को न छेड़ते हुए उसके जो कन्वर्जेंस होता है, मॉडर्न कोरिलेशन ट्रांसलेशन जो बहुत सी जगह दिया हुआ होता है सुश्रुत संहिता में भी, तो उसमें अगर हम लोग ये चीजें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सके तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स तक जाकर और रिकॉर्डेड चीजें बनती जाएगी सर। इसके लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे क्या, या ये सजेशन के ऊपर वर्क हो पाएगा क्या? इस पे जरूर विचार करें, मंथन करें, और अगर वैसा हो सकता है तो जरूर उसके करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ सर। इसके ऊपर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर योगेश बड़वे, हाँ उनसे वो इस पर काफी सोच रखते हैं। उन्होंने ही यहाँ पर जो हम लोग लैब पोली करते हैं, उन्होंने नाम दिया कि हम लोग इसको लैब पोली न करके हम लोग कम से कम आयुर्वेदिक सर्जन जो है उसको बोलेंगे नाड़ी यंत्र कृत पित्ताशय छेदन, और ब्रैकेट में लिखेंगे लैब पोली। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। और ये सब जो आपने कहा है कि वो तभी हो पाएगा जबकि हमारा एक्सपीरियंस कुछ है, आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है। पहले हम लोग का मोटिव होना चाहिए कि हम लोग कुछ करें, तो सब लोग कुछ ना कुछ करेंगे और फिर हम एक कॉन्फ्रेंसेज है, वेबिनार है, इसके माध्यम से एक दूसरे से शेयर करेंगे, जी सर, दूसरे भी इसको करें। मैं यहाँ पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, ऐसे बहुत सा मतलब जो वेबिनार जिन्होंने अटेंड किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ सर जो लैब की बढ़िया सर्जरीज करते हैं। तो उन या लोगों से भी या मैं या दरख्वास्त करूंगा कि भाई
आप जो है आपके प्रिस्क्रिप्शन पर ये चीजें, ये नामों का उल्लेख करते चले, जैसे कि सर ने भी कहा कि बड़वे सर ने कोई सजेशन दिया है, तो वो चीजों से हम लोग समाज में प्रचलित होते चलेंगे, ऐसा मेरा मत है। बिल्कुल सही, यही रास्ता है, यही रास्ता है। हम और लोग ये मिले। हमको जो डिस्क्रिमिनेशन मॉडर्न के लोग करते हैं हमारे साथ में, वो चीजें को ओवरकम करने में हम लोग जब प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक खुद का नाम होना चाहिए, खुद के पैथी का नाम होना चाहिए, उसके लिए भी हमने कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और जरूर उस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए, ऐसा मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा। बिल्कुल, इसमें सोचना सबने शुरू किया है, आपने भी किया है, सबने किया है, और सबको करना चाहिए, वो करना ही पड़ेगा, करना ही जी। पड़ेगा। और सर दूसरी मैं सभी से विनती करूंगा, यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कि नीमा सर्जिकल का मेंबरशिप आप जरूर लीजिए सोसाइटी का। इसमें हम लोग वेबिनार्स और हमने पारुल में एक सेमिनार भी, लाइव वर्कशॉप अरेंज किया था। वहां पर लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स आए थे और उसमें से वो सेमिनार में जितनी भी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स हुई थी, वो सभी लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स राइट फ्रॉम ट्राइकोलॉजी, क्षार सूत्रा, रेक्टोपेक्सी से लेकर अपेंडिसाइटिस, लैप कोली, मेश रिमूवल, ये सभी बातें आयुर्वेदिक सर्जन्स ने की थी, MS आयुर्वेदा के लोगों ने की थी। तो और वहां जितने लोग आए थे उसमें से 70-80% लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपोजर मिला था लाइव पेशेंट्स पर। तो हम सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे सर्जिकल सोसाइटी के पार्ट बनिए। हम लोग आपको मेंबरशिप लिंक भेजेंगे, आप जरूर उसके मेंबर बनिए और आयुर्वेदा के पैथी को आगे बढ़ाने के लिए, आपका खुद का अपग्रेडेशन करने के लिए खुद को और हमें सहकार्य कीजिए। इतनी मैं आप सबसे विनती करता हूँ। और सर आज का पार्ट कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक प्रमेय यू टू सर, ऑल। रमेश सर कंक्लूड करते। हेलो। हाँ सबसे सर पहले तो कंक्लूड करिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रमन सिंह सर को, कि जिन्होंने इतना वैल्यूएबल गाइडेंस हम सबको दिया है। मैं यहाँ से आगे ये भी अपेक्षाएं उनसे रखता हूँ कि यहाँ से आगे और ऐसे चीजें वो हमें बताते रहेंगे और नए जनरेशन को लेप्रोस्कोपी के लिए, नाड़ी यंत्र के प्रचलन के लिए और ज्यादा वो प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ जो हम प्रमेय सर, सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक हाँ सर क्वेश्चन बोलिए। विकास साहू सर पूछ रहे हैं ड्रॉप बॉक्स में। यस सर। आयुर्वेदा सर्जन्स को लीगल परमिशन के संदर्भ में पूछ रहे हैं, लेप्रोस्कोपी आयुर्वेद सर्जन्स को लीगली अप्रूव्ड है या नहीं, इस संदर्भ में क्वेश्चन है। सर बेसिकली अगर इस सवाल का जवाब देना चाहे तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया राजाश्रय, जो हमारे इसमें लिखा है राजाश्रय, फिलहाल हमारे पैथी को राजाश्रय ऑल ओवर इंडिया नहीं मिला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नागपुर में हूँ या महाराष्ट्र में हूँ, तो महाराष्ट्र में राजाश्रय है, जो स्टेट गवर्निंग बॉडी है, जो मेडिकल गवर्निंग बॉडी है स्टेट की, वो उन लोगों ने हमें परमिशन दिया है कि आप सर्जरी कर सकते हो। सबसे बेसिक पहले मैं ये समझाना चाहूंगा कि लेप्रोस्कोपी की परमिशन कभी नहीं मिलेगी आपको। आपको परमिशन मिलेगी सर्जरी की। लेप्रोस्कोपी ये जस्ट एक इनोवेशन है। आपने मारुति 800 खरीदा था, आपने जब लाइसेंस निकाला तो आपके पास मारुति 800 थी, आप मारुति 800 चलाते थे। लेकिन अगर आज आप मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू चलाना चाहोगे, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भैया आप नया बीएमडब्ल्यू का लाइसेंस निकालेगा या मर्सिडीज का लाइसेंस निकालेगा। So what is the basic thing? You should have a permission or you should have a right to do surgery. So at present, this chapter to allow someone from BMS faculty to operate or not to operate is a state governing chapter. महाराष्ट्र स्टेट है, ऐसे ही कुछ स्टेट है। थोड़ी देर पहले रमन सिंह सर ने वही क्लैरिफाई किया है कि नीमा सर्जिकल सोसाइटी और नीमा इज फाइटिंग विद द सेंटर काउंसिल कि जो यूनिफॉर्मिटी ऑल ओवर इंडिया आनी चाहिए। ऑल ओवर जितने भी स्टेट्स इन महाराष्ट्र इंडिया है, उन सबको ये अधिकार मिलना चाहिए, वहां के डॉक्टर्स को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो सर्जरी परफॉर्म कर सके। सर्जरी कैसे परफॉर्म करनी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो इंडिविजुअल स्किल्स पे डिपेंड करेगा। जो बंदा ओपन सर्जरी अच्छे से करता है वो ओपन करेगा, जो लैप्रोस्कोपी अच्छे से कर सकता है वो लैप्रोस्कोपी करेगा। बेसिक है, सर्जरी की परमिशन है क्या, दैट विल बी गवर्न बाय योर स्टेट गवर्निंग बॉडी। आप जिस स्टेट में करते रहते हैं या जिस स्टेट में आपकी प्रैक्टिस है, आपको उस स्टेट में ये देखना पड़ेगा कि वहां के स्टेट ने आपको क्या अधिकार दिए है, उस हिसाब से आपको बढ़ना पड़ेगा। सो फॉरगेट लैप्रोस्कोपी। अगेन आई एम सेइंग, मैंने जब पिछली बार थोड़ी देर पहले भी जो मैंने बताया था कि लैप्रोस्कोपी इज जस्ट एन इनोवेशन। आप मारुति 800 से बीएमडब्ल्यू चलाने की कोशिश कर रहे हो, चला रहे हो, नॉट कोशिश, चला रहे हो, कोई सेपरेट लाइसेंस नहीं लगता।
बेसिक क्या है, आपके पास बेसिक लाइसेंस होना चाहिए, और बेसिक लाइसेंस के लिए आपकी स्टेट गवर्निंग बॉडी आपको क्या परमिशन देती है वो आपको चेकआउट करना सर पड़ेगा। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। अभी मैं लगभग 6 से 7 स्टेट्स में सर्जरी के जीआर के लिए परमिशन, मतलब कोई जीआर है क्या पूछा, तो मैक्सिमम स्टेट्स में यूजी के जीआर से, पीजी का जीआर सर किसी भी स्टेट में नहीं है, एमपी में नहीं है, गुजरात में नहीं है। हमने उनसे मांगने की कोशिश की तो वहां पर पीजी का कोई जीआर ऐसा रेगुलेशन उन्होंने अभी तक बाउंड नहीं किया है सर। ये चीज ध्यान में आई है। मतलब जितने भी सीनियर प्रैक्टिशनर्स भी उस स्टेट के हैं उनसे भी पूछा गया तो उनके पास भी ऐसी कोई पीजी का डॉक्यूमेंटेशन आया नहीं है। इसीलिए हम तो लोगों को संगठित होके यहाँ पे स- कोशिश करनी पड़ेगी, हम लोगों को सबको संगठित होना पड़ेगा, नहीं, हमारे स्टेट ये गवर्नमेंट के अच्छी पास बात है। जाना होगा। हमने छत्तीसगढ़ के लिए प्रमेय सर एक मिनट, हमने छत्तीसगढ़ के लिए एफर्ट लिए है सर कि एक ड्राफ्ट रेडी हो रहा है नीमा सर्जिकल के माध्यम से। वो ड्राफ्ट हम लोग वहाँ के सीएम और हेल्थ मिनिस्टर को देकर वहां पर पीजी का जीआर जो सेंटर का है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में हम लोग वहां पर है, जो इजीली हो जाएगा क्योंकि स्टेट का कोई जीआर नहीं है। वैसे ही प्रयत्न हम लोग बाकी स्टेट में भी करेंगे। एक ड्राफ्ट रेडी होने के बाद हम लोग उसको सर्कुलेट करने वाले हैं और वो रिस्पेक्टेड स्टेट की बॉडीज में, जैसे कर्नाटक है, एमपी है, गुजरात है, तो ये सब स्टेट्स में जहां पर हमारे लार्ज नंबर में प्रैक्टिशनर्स है वहां पर हम लोग को वो जीआर हेल्थ मिनिस्टर को और सीएम को सर्कुलेट करने की कोशिश में है सर, थ्रू नीमा एंड नीमा सर्जिकल सोसाइटी। तो वो एक लाइन पाइपलाइन में है तो उसमें सेंट्रल का जो जीआर हम लोगों के लिए निकला है वो प्रिवील कर जाएगा, ये हम लोग कॉन्फिडेंट है सर। तो उस सबके सहकार्य के लिए आप नीमा सर्जिकल सोसाइटी से जुड़िए और अ, नीमा सर्जिकल सोसाइटी से जुड़कर हमसे हमारा मेंबरशिप लीजिए, हमारे टच में रहिए और ऐसे ही हम लोग वेबिनार्स में आइडियाज हमें शेयर कीजिए कि आप किस टॉपिक पर आज मतलब डिमांड किस टॉपिक की आज प्रेजेंट सिनारियो में, अगर वो भी चीजें समझ में आई तो इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग टॉपिक सिलेक्ट कर पाएंगे। ये भी हम लोग आपके सामने ओपन टेबल में रखते हैं। प्रमेश सर कंक्लूड कर किए। Okay, okay, thank you. All the best. All the best. यस श्योर। परीक्षित सर, थैंक यू। हाँ, प्रमेश सर आपने वैल्यूएबल समय यस निकाला। यस, हमें हमें जुड़े रहना पड़ेगा, हमें एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। प्रमेश परीक्षित सर वोट ऑफ थैंक्स आप करेंगे। ओके ओके। सबसे पहले नीड ऑफ टाइम इज एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा और साथ में बढ़ेंगे। एक एमएसएल बहुत सारे हैं लेकिन यूनाइटेड कितने हैं ये इम्पोर्टेंट है। हमें यूनाइट होना पड़ेगा, एसोसिएशन से जुड़ना पड़ेगा। जल्दी आपको संदीप सर डिफरेंट ग्रुप्स में लिंक भेजेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। संदीप सर यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन में पॉसिबल होगा तो लिंक डाल सकते हैं। I am very much thankful to the efforts NIMA Surgical Society is taking for upgradation and legal permission of surgeries to be performed by Ayurveda surgeons in various states in India. Uh, in Under the very vigilant guidance of Dr. Raman Singh sir, Dr. Kashikar sir, Dr. Hemant Tushikani sir, Dr. Yogesh Bade sir, Dr. Dudmal sir, and all the stalwarts and seniors of in the field of Ayurveda. Uh, Today's session was really very informative session, and Dr. Raman Singh sir not only gave an idea of Ayurveda's Nadi Yantras and its correlation with modern surgery and how it is a basic. Uh, it is a Acharya Sushruta has given basic concept of modern laparoscopic surgery. Also, sir demonstrated few laparoscopic surgeries. This is really thought-provoking, knowledge-serving, and confidence-boosting session today.
So thank you, Raman Singh sir, for your nice presentation and time. I am thankful to Prameed Ravi sir to chair this session, and Dr. Sandeep Meshram sir for all his efforts. I think we should conclude this session. Thanks all the participants for joining this session. जुड़े रहे, आज नीमा डे है, जय नीमा, और इसके साथ हैव अ नाइस डे, शब्बा खैर, थैंक यू।